opportunity to contest elections, nomination forms if they are mentioned, notices, the manner of issuance thereof if it's mentioned in the constitution of the party. The constitution of the party. My lord, the constitution of the party is at page 124. And these provisions which are relevant are also mentioned in the order of the Election Commission. So we want to see the actual constitution of the party. My lord, the constitution of the party is at page 124. But these provisions particularly that have been mentioned by the commission in its order. If your lordship may graciously see page 136. Sorry, if your lordship may go back one more page. Page 135, Pakistan Tehreek-e-Insaf shall have the following organizations. Then the organizational structure is mentioned, and if your lordship may graciously be pleased to take a look at paragraph 9 on page 136. Paragraph 9 on page 136. 136. Yes, madam. A PTI Federal Election Commission shall be formed to conduct intra-party elections with a permanent secretariat. Excellent. Then there are general provisions. बड़ा अच्छा आइन बनाए सब चीजें इसमें तस्कराएं. जी sir. Then there is a principle of collecting this. आपको इनके आइन से कोई no sir मसला नहीं है. The Election Commission's objection is that the elections have not taken place in accordance with this constitution. अच्छा. उनका परमानेंट सेक्रेटरीट किधर है जी ऑफिस? My lord, पार्टी का मेन परमानेंट my lord, सेक्रेटरीट. the Election Commission is dealt with. नो ऑफिस का जो परमानेंट सेक्रेटरी इनका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट है ऑफिस या नहीं है? Not that पार्टी I am का aware पार्टी of. का पार्टी का तो है सर. वो किस जगह है? कुछ है कोई कहीं तस्करा है उसका? Not इस्लामाबाद इस्लामाबाद किस जगह तस्करा है इसका? देख के जरा बता देना किस पेज पे कहीं लिखा है ये हमारा. it's not specified in the से वो constitution. कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज में मुख्तलिफ होता है ना कि परमानेंट जो ऑफिस है पार्टी का इनके जो वो हैं खतूत या इनकी नोटिफिकेशंस उस पे लिखा है प्लॉट नंबर 1 स्ट्रीट 32 सेक्टर G84 इस्लामाबाद. यही है का हेड ऑफिस जो है मतलब. ठीक. Then my तो lord, ये जरा बताएं क्या प्रोसीजर क्या होता है इलेक्शन का? वो तो आपने बता दिया था कि वो इलेक्शन कौन कंडक्ट करेगा. अगर कैसे कौन अगर कोई शख्स लड़ना चाहे मेंबर, सिर्फ मेंबर लड़ सकते हैं इलेक्शन या कोई भी लड़ सकता है? members. पीटीआई के अपने. Yes sir. जी. If your lordship takes a look at page 140, paragraph 5, internal party elections. जी हाँ ये बताइए. Party elections shall be held in. ये तो वो तरीकेकार आपने बताया था. जी सर. Elections chairman का किस तरह होगा ये सारा मेंशन है. And then the elections of other officers. अगर आपने कहा 5 साल, इधर तो उन्होंने लिखा है कि चेयरमैन के इलेक्शन हर 2 साल में होंगे. शिक नंबर 5(1)(3) और शिक नंबर 5(2)(1) कहती है कि बाकी ओहदेदार हर 3 साल में होंगे इलेक्शन. आप क्यों कह रहे थे कि हर 5 साल में होना चाहिए? Under section 208 of the Election Act, the proviso 208 subsection 1 of section 208. एक सेकंड My lord. ये पढ़ी. Can you read it? Yes, my lord. Subsection 1, then your lordship will see the proviso, provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two ये elections. तो आउटर लिमिट. ये outer limit है. आउटर इनर लिमिट तो इन्होंने खुद तय की हुई है कि 2 साल के चेयरमैन के होंगे, 3 साल के होंगे, बाकी और दो. जी सर. यही पोजीशन है. बिल्कुल बिल्कुल यही है. जी. If your lordship will see page 141. जी. 5.1.3, election of the chairman shall be held 2 years before each scheduled general election in the country. 5.1.4, in case the chairman position falling vacant due to any reason, the SG, which is the Secretary General, shall take additional charge of the office in the interim, and election for the chairman's office shall be held within 30 days of the position falling vacant. एसजी क्या है? Secretary General. वो कौन है?
Secretary General, my lord, नहीं इनके कौन कोई हैं मुंतखब? इस वक्त that's a grey area, but they claim it is Mr. Umar Ayub. The Election Commission maintains that the previous Secretary General, as per their record, Mr. Asad Umar, continues to be the Secretary General on their record. अच्छा, असद उमर साहब ने इनकी पार्टी छोड़ दी है? There's nothing on record. Press में उनके statement जरूर हैं. How did Mr. Umar Ayub was appointed? If your lordship may see page 464. Page 464. Volume 2. Volume 2, my lord, page 464. This is not Umar Ayub, this is the Chief Election Commissioner. यार क्या करते हैं? So 460. जी 464. पार्ट 2 है. Part 2. This is how the Federal Election Commission was appointed. ये तो नोटिफिकेशन है 28 नवंबर का. जी सर, उमर अयूब खान साहब का नोटिफिकेशन है. पढ़िए. Following the resignation of Barrister Gohar Khan on November 27, 2023, it is notified that Mr. Niazullah Khan Niazi is hereby appointed as CEC Pakistan Tehreek-e-Insaf with immediate effect. ये तो उमर अयूब खान इशू कर रहे हैं. उमर अयूब खान साहब किस तरह अपॉइंट हुए? There is nothing on the record of the Election Commission of नहीं तो Pakistan. ये गौहर खान साहब किस ओहदे से मुस्तफी हो रहे हैं? Sir, from the post of the Chief Election Commissioner. अच्छा, ओके. But again, there's nothing on the record of the Election Commission communicating that, because in law, if your lordship will ये see, इनका कोई इस्तीफा है या इनको निकाला गया है असद उमर साहब को? not on the record of the Election Commission. अच्छा, आप बता रहे थे तरीकेकार. जी sir, if your lordship will see page 5.1.3, which talks about the Election Commission, the election of the chairman. हो गया, तरीकेकार बताइए. जी sir. Then election of other office bearers. The elections for following offices shall be held every 3 years. देखिए, तरीकेकार बताइए. Sir, 5.2.2, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings as given in the relevant clauses. ये बताइए ना relevant clauses. Any losing panel shall get 2 seats. In the relevant executive committee, provided it had secured more than 35% of the total poll votes. Any losing panel shall get 1 seat in the relevant executive committee, provided it had secured more than 20% of the total poll votes. The method of removal from the office is only through the SCAD as provided for in the relevant section. There is no provision for a vote of no confidence at any level. Any seats falling vacant in any of the executive committees shall be nominated by the relevant panel. तो ये पैनल का क्या मतलब है? Sir, when elections are announced, various people come up and panels are announced that these following persons are on one panel, other persons are on another panel, and elections are held on that basis. So you belong to various, within intra-party there are, let's say, groups, and you belong to various जब groups. ये इलेक्शंस हुए तो कितने मेंबरान मौजूद थे? Sir, the elections, so far as the elections were concerned, they were all elected as we showed to your lordship. नहीं, वो तो उन्होंने लिखा ये मुंतखब हो गए, Unopposed. मगर अनअपोज हो गए, मुंतखब हो गए जी। मगर उस मीटिंग में ये वो जो आप उसको कहना पसंद फरमाएं, इलेक्शन में 500 लोग थे, 1000 लोग थे, 10,000 लोग थे, मतलब कितने लोग थे? My lord, we don't know, because once the venue was... इन्होंने बताया कुछ या नहीं बताया? When the venue was announced that the elections are going to take place मेंबरशिप आपको पता है कितनी है? in KPK,
इधर हुए इलेक्शन कहाँ हुए एक्चुअली? in KPK. किस जगह, कौन से, किस But sir, होटल में, the दफ्तर में? election commission wrote a letter to them. नहीं, Yes. एक्चुअली हुए किधर? Venue of The election. reason why we are unable to tell your lordship the venue is that we wrote a letter to them that in order to make arrangements and in order to provide security, please communicate to us where these elections are आपको नहीं taking पता place. They didn't communicate to us where the elections were आपको नहीं taking पता place. है? No, sir. हम इसे पूछ लें खान साहब से। खान साहब, इलेक्शन कहाँ हुए, कौन सा वेन्यू, कौन सा था? नहीं, वेन्यू कोई होटल में हुए, कोई दफ्तर में हुए, किसके दफ्तर? हाँ, कौन सी जगह ओपन? वो एक छोटा सा गांव है, क्रिकेट ग्राउंड है। स्मॉल विलेज। अब आपसे सिर्फ एक सवाल पूछे ना छोटा सा, किस जगह हुए? तो आपने कहा क्रिकेट ग्राउंड में हुए। चिमकनी में कोई जगह है। छोटा सा गांव है। क्या नाम है? रानो गढ़ी। ये किधर है ये कोई आपका नोटिफिकेशन था कि हम इलेक्शन फला तारीख को करने जा रहे हैं चमकनी रानो गढ़ी में, कि जो मेम्बरान आना चाहें उधर वोट डालने के लिए? वो किस सफ़े पे है? ये रानो गढ़ी का इंतखाब क्यों खास तौर पे हुआ? तो छोटी सी जगह गांव है, अननोन प्लेस है। नहीं, ये जरा बताएं, कोई नोटिफिकेशन है सर रिकॉर्ड पे? No, sir. आप बताएं। What we नियाजुल्लाह साहब, कोई ऐसा नोटिफिकेशन है कि कहीं ये जगह हो रही है इलेक्शन, तो मेम्बरान को पता तो चले ना वोट डालने कहाँ आएंगे वो? My lord, at page 93 in volume 1 is the letter which we received from the Pakistan Tehreek-e-Insaf. This was 90 page 93. 93। Yes, madam. ये लेटर है जो प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी के लिए उन्होंने लिखा चीफ इलेक्शन That in compliance of the order dated 23rd November, 93, part 3. PTI has announced to hold the intra-party election on 2nd December 2023. According to the Constitution, PTI, the Federal Election Commission of PTI, has announced a schedule with polling day as December 2, 2023. The venue would be Peshawar KPK. You are kindly requested to issue necessary direction to the Chief Secretary KPK and IGP KPK or any other officer as you may deem necessary to provide us appropriate permissions and security so that order of this honorable commission could be complied with. Sir, if अब्दुल्ला साहब, इसमें आपने तो चमकनी का जिक्र नहीं किया है, तो आपने कहीं पेशावर में हो रहे हैं इलेक्शन। पेशावर केपी नहीं, तो पेशावर तो एक बहुत बड़ा शहर है, तो कहाँ आपको सिक्योरिटी दी जाए? नहीं, कहाँ लिखा है ये? आप वो तहरीरी बताइए ना, जो वो किधर बताया आपने? सिर्फ जगह बता दें, वेन्यू कोई है, कोई कागज रिकॉर्ड पे हमारे? नहीं, तो जब ये सवाल उठेगा कि आपके मेम्बरान को पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ जाके वोट डालें? भाई, इलेक्शन कमीशन तो आपके मेम्बरान नहीं है ना, ये तो एक रेगुलेटरी बॉडी है। मगर आप जरा सुन लीजिए ना, आपके अपने मेम्बरान जो हैं उनको कैसे पता चलेगा मैं कहाँ जाऊं वोट देने अपना? आप जवाब नहीं दे रहे हैं सवाल का। चलिए खैर, आगे बढ़ें। My lord, if your lordship may graciously turn the page, I am directed to refer to Election Commission of Pakistan. This is the letter from Commissioner Peshawar Division. 94 के ऊपर Page 94. Commissioner Peshawar Division writes to them, I am directed to refer to ECP dated 30th November 2023 regarding above noted subject and to state that immediately on receiving the directions you were contacted on telephone number such and such as well as through letter dated 30th November. On same day, copy enclosed
to provide the necessary information so that foolproof security could be provided as directed by the Honorable Election Commission of Pakistan. I am further directed to state that not only are these instructions of the ECP, but prudently this is required in the present security environment where the province of Khyber Pakhtunkhwa is facing peculiar security environment every day, and where the law enforcing agencies are very particular about security plans, especially regarding public gatherings in Peshawar which have faced attacks on LEAs and others leading to significant loss of property. It is however noticed that no response has still been received, and therefore not even the initial work for a security plan has been started. My Lord, we therefore write to them, next page, that they should on immediate basis provide us, and then if your Lordship may see the next letter, it goes from the Election Commission of Pakistan on 30th November, page 96 and 97. I'll read two letters. 97, if your Lordship may proceed to immediately. I am directed to refer to the Honorable Election Commission of Pakistan dated 30th November 2023 on the above referred subject, and to state that in order to comply with the directions of the Election Commission of Pakistan, the following information may please be provided to make necessary arrangements for peaceful conduct of said election. 1. Venue. 2. Expected start and conclusion time. 3. List of polling staff. 4. List of participants. वो venue की बात है. जी sir. Venue right at the top. Number 1 we say ask, tell us where the venue is. जवाब मिला आपको इसका? No sir. We got no reply to this letter. तो देखिए, एक तो बात है ना, सरकार चले वो कहेंगे जी सरकार तो छोड़ो, हमें आपकी सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, मगर मेम्बरान को तो पता होना चाहिए ना कि मैं जाके कहाँ वोट डालूं अपना, उनको तो पता हो। आप अपने वक्त पे जवाब दीजिए ना, हम सवाल आपसे पूछ चुके हैं मगर आप जवाब नहीं दे रहे ना, बहस ना कीजिए। हमने सिर्फ एक मामूली सा सवाल पूछा है, कोई कागज है रिकॉर्ड पे जिसे आपके मेम्बरान को आपने बताया कि इस जगह इलेक्शन होंगे, ये तीसरी बात है बस। अब आपके पास माइक पे आ जाइए ना। कोर्ट ही कंसर्न थे कि आपको तो अपने मेंबर्स को कि हमें पता था कि भाई अगर आपका मिसाल के तौर पे मेंबर ये बैठा हुआ है, वोट डालने जाना चाहे तो उसको पता तो होना चाहिए मैं कहाँ जाऊँ वोट डालने। तो हमने व्हाट्सएप के जरिए बता दिया था कंसर्न जो ड्यूटी लगाई थी असिस्टेंट कमिश्नर, ये आप किधर बात कर रहे हैं कि हमारा, और वहाँ लोग पहुंचे। मैंने ही आपके हर सूबे में आपके मेंबर्स हैं ना नियाजी साहब, आपके हर सूबे में मेंबर्स हैं ना जी। आपका जो इलेक्शन का तरीक़ेकार है वो तो हर जगह से सूबे से भी लोग आने थे ना जी। तो अगर आप पेशावर में एक अननोन प्लेस पे कोई इलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें सिंध के लोगों को भी आना है वोट डालने, पंजाब के भी आना है और बलूचिस्तान से भी आना है। अगर आप चलाएंगे वीडियो मैसेज, नहीं मैं वीडियो से नहीं, आप वीडियो की बात नहीं, आप ये वीडियो की बातें छोड़ दें, तरीक़ेकार से हम जानना वीडियो पे चाहते हैं। केसेस नहीं चलाते हैं, हम केसेस जो हमारे सामने चीजें होती है उस पे चलाते हैं। ये आप लोग वीडियो बाहर जाके जितने मर्जी चला लें, उस दिन अगले दिन भी हमने यही बात की थी किसी केस में कि भाई ये हम आईनी अदालत है, कोई एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं कि कोई इतला आप तहरीरी तौर पे है या नहीं है, बस खत्म। इलेक्शन कमीशन से भी जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है ना उसमें वो आपसे पूछ भी रहे हैं और आप लिख नहीं रहे। वेन्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना इलेक्शन के लिए कि आप उनको इंटीमेट करें। पूरे पेशावर में वो सिक्योरिटी आपको देंगे या सिर्फ एक जगह पे देंगे? क्योंकि जितने भी लेटर आपके हैं उसमें लिखा हुआ है कि पेशावर में केपीके में हो रहा है, केपीके पेशावर, कोई वेन्यू नहीं है। अब वो आपसे बार बार पूछ भी रहे हैं कि किधर सिक्योरिटी फराम करनी है। तो पूरा पेशावर में फिर कहीं भी इलेक्शन हो रहे होंगे, इसका मतलब है कि अगर कोई अनसर्टेन चमकनी में कर लिया, आप ना मांगते हो सिक्योरिटी, ये आपका अपना वो है, मगर ये 30 नवंबर को आप कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी दो, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एट द वेन्यू ऑन पोलिंग डे। चलिए खैर आप सोच लीजिए, बाद में बता दीजिएगा आगे। जी भाई आप सिंपल जवाब कर रहे हो, आप हमसे पूछिए मौजूद है। हाँ
हमने व्हाट्सएप कर दिया, इलेक्शन कमीशन से भाई मांग ये बात आप 6 दफा कर चुके हैं। Your Honor, हमने उनको तहरीरी हम आपको दे देते, इनको भी दिया हुआ, इनके पास मटीरियल है। हमने पेशावर कमिश्नर और पुलिस को कहा आपके मेंबरशिप कितनी है आपकी? हमने उनको कहा कि अंदाजन मेंबरशिप कितनी है आपकी? 8,37,950। ये आपके रजिस्टर्ड, ये मेरे रजिस्टर्ड मेंबर है, वोटर है और डेटा भी मेरे पास है। 8 लाख को पता होना चाहिए था या नहीं कि इलेक्शन का पूरे मुल्क को पता था, हर जगह पता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा आप रहने दें, अभी अब हम आपसे एक छोटी बात पूछ रहे हैं, वो उसका सिर्फ जवाब दे दें, बहस आपकी सुनेंगे। यस, चले आगे बढ़िए मखदूम साहब। सिर्फ एक हमारा प्लीज ठहर जाइए ना, एक ऑब्जेक्शन आप प्लीज हम इनको सुन लें ना। इन्हीं पे ऑब्जेक्शन ना सर। भाई आप अगर हर वकील बहस करेगा तो हम किसी को नहीं सुन सकेंगे। आप सीनियर वकील बैठे हैं, कम से कम उनसे इजाजत तो ले लीजिए। सर मैं एक या उसकी कोई अहमियत नहीं है, आपके अपने वकील हैं। लॉर्डशिप एक आपकी जजमेंट मैं नहीं आपसे सुनूंगा भाई, आपके जब सीनियर वकील मौजूद हैं, ऐसे नहीं होता है। आप तो पार्टी है ना, आप आज हमारे सामने वकील की हैसियत से नहीं खड़े हैं, यू आर रिस्पोंडेंट। ठीक है, आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, सारा इल्जाम आपके सर पे है, तो आप आज वकील नहीं हैं। या तो आप कहें कि मैं अपनी वकालत कर रहा हूँ, वो अलग बात है। आपके वकील कौन है? आपके वकील कौन है? हामिद खान साहब है। तो फिर वो मौजूद हैं। ठीक, शुक्रिया। But I was reading to your lordship from page 55 of the order of the election commission, and if your lordship turns ये तरीकेकार खत्म कर लेना इनका, आइन में जो उनके आइन में इंदराज है, तरीकेकार क्या होता है? my lord, that was Federal Election Commission is provided. इनका जो आइन में जो आप कह रहे हो कुछ क्लॉजेस पढ़ रहे थे 5 पॉइंट, तो इसमें और कुछ तरीकेकार है या बस ये है? Sir, page 140 I was reading to your lordship. नॉमिनेशन फॉर्म का कोई तरीका है, मेंशन्ड है, कैसे होना चाहिए? It doesn't go into that many details, but if your lordship sees on page 141, paragraph 5.2.2, जी, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization as given in the relevant clauses. ये रेलिवेंट क्लॉजेस बताइए कौन से हैं? ये सर आगे आते हैं, अगर आप सर आगे देखें then on page 142 नॉमिनेशन फॉर्म को भरने का क्या तरीका है, वो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है या कोई अलग से रूल है? no sir, it's not there. How the nomination form will be given to the ये मतलब वो जो अगर कोई क्लॉजेस है बताते नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। Sir, the organization is given, sectoral organization is given at page 142 onwards. Then if your lordship will see, thereafter there is the election commission is mentioned. And if your lordship sees ये the central organization is mentioned. सबसे क्या पूछ रहे हैं कि बता दें तरीकेकार क्या? ये एक पढ़ लिए पेज 90 पे मेरे ख्याल इनका है ये 192 my lord. नो 90 पे ये कहीं इनके कॉन्स्टिट्यूशन में नॉमिनेशन फॉर्म का हासिल करना और उसको जमा करने का कोई तरीका नहीं है, आप कह रहे हैं ना Sir. अब पेज 90 पे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेटर लगा हुआ है, पेज 90 पे ये इनका इलेक्शन शेड्यूल है Yes, my lord. जो जारी कर रहा है फेडरल इलेक्शन कमीशन, उस पर नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब की साइन है। जी सर। अब इसमें देखें ना, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर 29/11/2023। Right. ये लेटर इशू भी 29/11 को ही हुआ है इनकी सिग्नेचर से। Nomination forms to be received by returning officers, appeals against objections, display of names. नहीं तो ये नॉमिनेशन पेपर का कोई वो है फॉर्मेट या क्या उसको कहते हैं, प्रोफॉर्मा? Sir, it's not there in the constitution, it's not there in the rules issued by the election commission. But about where is this letter, because इसके अंदर ये मेंशन है ना, प्रोसीजर पूरा इन्होंने किया हुआ है ना। जी सर। अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म, डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल, पोलिंग डे एट पेशावर खैबर पख्तूनख्वा। ये रिटर्निंग ऑफिसर्स कौन थे? नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग The ऑफिसर्स। returning officers were, my lord, if your lordship may turn the page at page 91.
The returning officers are nominated. They are all nominated by the Chief Election Commissioner. For the Federal Election Commission, एक सेंट्रल इलेक्शन है, एक प्रोविंशियल बलूचिस्तान, केपीके, पंजाब एंड सिंध, इसके लिए 4 अलग-अलग 4 है सर। फिर अगर आप अगला सफा देखेंगे सर, तो प्रिजाइडिंग एंड असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आर नॉमिनेटेड। They are 10 in number. ये डिटेल नहीं है कि वो कितने लोगों ने कंटेस्ट किया या नहीं किया, या फॉर्म दाखिल करके विड्रॉ कर लिया तो अनअपोज आ गए, जो नॉर्मली होता है ना कि आप विड्रॉ कर लेते हो कि ठीक है, आई विल Not on our record, my lord. Not on our record. Even the withdrawal of the other panels, we don't have any records. Withdrawal panels की बात करें। Withdrawal कहाँ है? हमारे पास नहीं, ये we don't even have a letter showing कि बाकी panels ने withdraw कर दिया। Announcement कहाँ है? जी So, my lord, these are there. Then, if your lordship may go back to page 192, how the Federal Election Commission is to conduct itself. You have taken my book, yeah, that's my lord, Federal Election Commission. If an election commission shall be formed comprising following Federal Election Commissioner. बात कर चुके हैं आप सर, अगर आप रिपीट ना करें कुछ। नहीं सर, ठीक है। अगर आप सर पैराग्राफ 2 onwards देख लें, and then the functions, and then ये लास्ट इलेक्शंस कब हुए थे इनके, इस इलेक्शन से पहले? ये कौन से इलेक्शन? PTI के इलेक्शन सर लास्ट पोलिंग डे 2 दिसंबर के इलेक्शन से पहले कौन से इलेक्शन हुए? 2017, ये डेट 19th June 2017। 19 जून 8 जून, तो ये कह रहे हैं 22 को हुए, आप कह रहे हैं 17 में हुए। What happened was, नहीं, वो दिखाइए हमें, रिकॉर्ड से बताइए। my lord, the 8th June 2022 intra-party elections were declared void by the Election Commission. My lord, the first order of the of the Election Commission deals with it, and that order of the Election Commission is at page 428 in part 2 of your lordship's file. 428. ये क्या कह रहा है ऑर्डर? Sir, if your lordship will see, page 435, paragraph 424. 435 paragraph. Just paragraph 24, just I'll read 5 lines and then I'll move on from here, my lord. We scrutinize all the documents provided by the CEC in respect of meetings of the General Council, as well as the alleged intra-party elections of various office bearers, but we did not satisfy therefrom the available records submitted by CEC that either the National Council dissolved and ever convened its meeting, or on 10th of June 2022 at this juncture. It would be pertinent to refer to various letters. Your lordship may different dates for that election. each of these letters which are mentioned. कंक्लूड क्या कर रहे हैं ऑर्डर, क्या क्या है? Sir, different dates were given to them, and वो वाला पोर्शन पढ़ देना। my lord, कंक्लूडिंग क्या कर रहे हैं? letter dated 10th. लीनियंट व्यू लेके इसमें उन्होंने कहा कि वो तो आगे eventually पढ़िए ना। ये करते हैं। पैराग्राफ 34 पढ़िए, आखिरी पैराग्राफ है ना जी सर। इसको थोड़ा सा जल्दी करें ना। All right. Keeping in view the aforestated reasons, we are confirmed in our views that the respondent party failed to hold transparent, just and fair intra-party elections in accordance with its prevailing Constitution 2019, allegedly held on 10th June 2022,
which is highly disputed, objectionable, which could not be accepted at all. Therefore, it is held that respondent party has failed to hold its intra-party election within the extended period of 1 year till 13th of June 2022, but we, instead of taking the final step to invoke the provision of section 215(5) of the Election Act, 215(5) क्या है? 215(5) ये कहता है सर कि अगर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कंप्लाई नहीं किया और उसको 209 के साथ पढ़ के कि इलेक्शंस जो हैं वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, so then you will be denied a symbol. That's one of the consequences. पढ़ते रहिए प्लीज. A lenient view is taken with direction to the respondent party to hold its intra-party election strictly in accordance with the prevailing party constitution within 20 days positively, and its result along with all the required documents including Form 65 shall be submitted thereafter the election within 7 days before the commission. So this is taking a lenient view. They said hold elections. आगे पढ़िए. In case the respondent party fails to comply with directions of the commission and fails to hold its intra-party election within the prescribed 20 days, which will run from today, the date on which this order is announced, in such eventuality, the respondent will suffer the penal consequences of section 215, subsection 5 of Election Act accordingly, and would be ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis Shura Parliament. ये चैलेंज हुआ ऑर्डर. Sir, this was challenged before the Lahore High Court in a writ petition number 5791. एक सेकंड. In writ petition number 5791 of 2023. 5791 of 2023. ऑर्डर किधर है? No, my lord, this is, I'm sorry, I've given you, lordship, the wrong number. Sorry, in WP number 81171. 811 of 2023. दोबारा कहिए. 81171 of 2023. जी. This, my lord, is at page 644 of your lordship's file. Part 3. Part 3. Yeah, this left page to 644. 644. This is a copy of writ. Where is Yes, the my order? lord. Yes, my lord. Then, no, my lord, no order is passed. What happens is that this is referred to a 5-member bench of the High Court. At 6:55. ये जो क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी पे एडजेंट हुआ ये. जी सर. ये पढ़िए ऑर्डर. Sir, through the instant constitution petitioner, the petitioner has made the following prayer. In view of the foregoing, it is respectfully prayed that this honorable court may be pleased to declare and hold that the impugned order of 23rd November 23 is misconceived, quorum non judice, and set it aside inter alia on facts and grounds as urged herein above. Declare, find, and hold that the intra-party elections held on 10th of June 2022 had been validly held in accordance with the party constitution and law. Declare that amendment to Article 5, Clause 5 has been validly and lawfully made in accordance with law and party constitution. In the meanwhile, this court may kindly be pleased to suspend the operation of the impugned order dated 23rd November 2023 and restrain ECP from passing any further adverse order till final disposal of the title petition. Notice is issued. If your lordship will then turn the page to page 657. This was the last order prior to be heard with WP 332. This, as your lordship will see, is fixed today. ये 332 क्या चीज है? Page 2 of this order, 656, इसमें लिखा है कि ये केस सुना जाएगा एक और केस के साथ WP. There is some other case. ये ऑर्डर तो ये बताता है 8/12/2023 का कि during that period they have already conducted fresh elections. ये सर ये 657 इसमें लिखा है ना बीच में. When ये नहीं पढ़ा है. ये 657 सर.
अच्छा, ये ऑर्डर तो फिर ये 15-12 का आपने पढ़ा है जी सर, 8-12 का ऑर्डर उससे पहले का सर जो है, इसमें भी WP 332 का जिक्र है जी सर, मगर उससे ऊपर जो लिखा है जी, when confronted with ये 332 WP क्या चीज है? sir, there is another petition pending before a full bench of the court relating to other matters. I am not fully aware of it, what it is about. अच्छा, ये जो पिछले इलेक्शन हुए थे इनके, जो आप कह रहे हैं जायज नहीं है और वो कह रहे हैं जायज है, उनके रिजल्ट क्या है? इलेक्शन रिजल्ट My lord, आप कह रहे हैं ना कि ये जो इलेक्शन, इनका कहना है कि ये 8/6/2022 के जो इलेक्शन थे इनके, ये सही थे। आपको कहना है ये इलेक्शन सही नहीं थे, उसके रिजल्ट्स क्या हैं? उसका सर, उसके नतीजे पे they held another election thereafter. नतायज किधर है? कौन जीता? This is the election which that is the election which your lordship saw where everybody was नहीं, ये तो अभी के इलेक्शन की बात हो रही है ना, मैं 8/6/2022 के इलेक्शन का पूछ रहा हूँ, वो नतायज कहाँ है उसके? आप सवाल समझ गए? They are not on the record. The reason why we have not brought them on the record is that they accepted the order of the election commission and they have. वो वही लोग हैं जो कि ये मौजूदा हैं या अलग लोग थे? My lord, I'll have check. We can check, but खान साहब आप बता सकेंगे, इस पर रोशनी डाल सकेंगे? जो 8/6/22 का जो आपका इलेक्शन हुआ था, उसमें इलेक्टेड कौन हुए? आप बकौल आपके कौन लोग इलेक्टेड हुए उनसे? हाँ, नहीं, वो फर्क है जो मौजूदा इलेक्टेड लोग वो पता नहीं। ये दे दें, मैं बताता हूँ इस वाले में पढ़े। उस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में सर इन्होंने ये इलेक्शन कराया नहीं, बेशक देखिए, हम आपको बिल्कुल, आपकी बात जायज है, हम आपको वक्त देंगे, मगर जैसे जैसे सवाल उठते जा रहे हैं तो वो आप नोट करते जाइए, या फिर अगर आपके फौरन जवाब है तो दे दीजिए, क्योंकि ये 3 वॉल्यूम्स इन्हें फाइल किए हैं, हमें भी बड़ी दुश्वारी हो रही है इसको पढ़ने में, तो अगर किसी चीज का जवाब है तो दे दीजिए, अगर जवाब नहीं आप लाना चाहते हैं बिल्कुल आप जरूर फाइल कीजिए। नहीं, आप नोट करते जाइए ना ये चीज। अब सिर्फ हमें ये बता दीजिए कि ये जो नताइज थे जो 8/6/2022 के, ये 8/6 इलेक्शन डेटेड, इसमें पेज 412 पे है। 10 को हुए, 6-8 को हुए, हमें 10/6/2022 के थे ना आपके पिछले इलेक्शन। इसमें पेज 412 पे है जनाब। प्रेयर में, हाईकोर्ट की प्रेयर में लिखा है 10/6/2022। 4-1 At that time, Gohar Ali Khan साहब चेयरमैन गोहर साहब थे। ये जो आपका 412 पेज 412 देख लीजिएगा। 412 हाँ, ये आ गया ना, नहीं ये तो कुछ और है। 412 सर, इधर पढ़ दें अगर आप पार्ट 2 में। हाँ, पढ़िए प्लीज जी, vis-a-vis letter dated so जनाब 412 पे है आप। नहीं, अगर इलेक्शन की सिर्फ डेट का इशू है तो वो तो आपके 10/6/2022 को हुए थे, वो आपकी ये तो प्रेयर से पढ़ रहा हूँ। आपकी जो हाईकोर्ट में प्रेयर है ना, इलेक्शन कमीशन तो जो आप नहीं जवाब नहीं, जो आपकी प्रेयर थी हाईकोर्ट में, लाहौर हाईकोर्ट की बात हो रही है। नहीं, ये कहा था कि जो हमारे पिछले इलेक्शन 10/6/2022 के थे वो ठीक थे, उनको वैलिड डिक्लेयर करें। वो जो पिटीशन पेंडिंग है आपकी हाईकोर्ट में, जो ये मखदूम साहब बता रहे हैं 5 मेंबर के सामने, जो जी वो फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए ना, आपने फ्रेश करा ली है, फिर उसके बाद करवाए दूसरे, ये क्योंकि they gave us 20 days to do that, so we had to do it within that prescribed time, and we did it, which they are challenging now. मैं जरा भी कंफ्यूज हो गया हूँ। बकौल आपके 10/6/2022 को इलेक्शन हुए जी, इनका कहना था वो सही नहीं है जी,
इन ऑर्डर पास किया, मगर वो ऑर्डर आपने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, आपने वो ऑर्डर माना नहीं किया, लेकिन कंप्लाई भी किया जी, कंप्लाई भी किया हमने उसी के तहत। तो फिर आपका कहना है ये वो जो पिटिशंस आपकी जो फाइल है वो आपने विड्रॉ करनी है जो हाई कोर्ट में पड़ी है, लाहौर हाई कोर्ट में WPR1171, लेकिन we have already complied with the order, so therefore that becomes fructuous. नहीं, मगर कोई इतला तो देना हाई कोर्ट को जाकर के। सर जी इसमें मेंशन भी होगी। आप पेज देखिए, पेज 657, पेज 657 आपका ये 81171 ऑफ 2023 पिटीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये आपसे पूछा उन्होंने, व्हेन कन्फ्रंटेड विद द क्वेरी दैट सिंस इंटर पार्टी इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ pursuant to impugn order dated 13 September 2023 passed by the election commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, उस पर आपके वकील साहब ने जवाब दिया कि ये अभी हम इसको already submitted to full bench of this court. तो ये नॉलेज में आ गया हाई कोर्ट। नहीं, ये पूरा आगे लिखे ना, सबमिट्स Submit that this similar question is already submitted before the learned full bench of this court in WP number 332 of 2023 and other allied matters. Proprietary demands that instant petition be also be referred to the learned full bench. ये हुआ है बस इसके में। मुझे देखिए, अब मैं जरा बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ। एक इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर आप किया, कब ऑर्डर है इनका इलेक्शन कमीशन का? ऑर्डर माय लॉर्ड 428 पे जो पेज है उसका तारीख है 23/11/2023 23/11/2023 ये नहीं वो जो रिट पिटीशन में चैलेंज किया हमें तो याद हो पहला वाला तो यही है ना, declare hold that impugn order. the matter was heard on 13 September. एक सेकंड, आपका ऑर्डर किधर इलेक्शन कमीशन का My जो lord, आप पहले पढ़ रहे page 428. This is the order passed on 23rd November 2023. 23rd नवंबर, ये डेट कहाँ लिखी है? सर डेट से पढ़ के बता रहा हूँ आपको, परेड क्लॉज में जो इनकी हाई कोर्ट में Date of hearing was 13/9. डेट ऑफ हियरिंग टुडे, अनाउंस टुडे। इसकी तारीख क्या है इस ऑर्डर की? इस ऑर्डर की तारीख सर 23/11 है, ये 428 पे लगा हुआ है। 23/11/2023 है जी सर। और नीचे उन्होंने साइन पे डेट नहीं डाली है, बट वो डेट ऑफ हियरिंग ऊपर लिखा हुआ है। जी सर। नहीं तो उन्होंने एक साथ ऑर्डर को चैलेंज भी किया और एक साथ उन्होंने इलेक्शन भी कर लिया। यस मैडम। ये हुआ। यस सर। तो फिर उन्होंने ये दरख्वास्त क्यों की हाई कोर्ट को कि मेरा ये इसको पेंडिंग रखें? वो कह रहे थे कि जिसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। They could have, but they नहीं, मैं तो मुझे इसकी जरा लॉजिक बताइए खान साहब। वो फिर अगर आप इलेक्शन करवा रहे हैं तो फिर उसको आप वापस ले लें, बात को खत्म करें, उसको जिंदा क्यों रख रहे हैं पिटीशन को, लाहौर वाली को? to the contrary, they had it referred to a larger bench of 5 judges. Am I missing something? I can't follow this. Sir, we don't know what was the logic. The elections had taken place, but they nevertheless मगर वो Lahore will explain why they are possible. जी फरमाइए। The 332 petition has actually been filed when Election Commission was trying to remove the chairman Imran Khan from the position of chairmanship of the PTI. And they were making that excuse. आप देखिए ना, अब आपने आगाज ही बात का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से किया है। No, Your Honor. आप हमें सिर्फ ये बता दें जी कि वो जो पिटीशन आपने जो फाइल की थी वो क्यों पेंड हो गई? उसको आपका क्या बना, आपने उसको जिंदा क्यों रखा है? Your Honor, वो उसके साथ क्लब है, वो सेम पिटीशन है, डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है क्योंकि इसमें चेयरमैन ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए वो उसके साथ हमने क्लब करवाया। लीगल इश्यूज पे यस 332 है। यस योर ऑनर।
खान साहब मुझे बात समझ नहीं है, आप मुझे समझा दें खान साहब, आई हैव नॉट अंडरस्टूड, जरा मुझे नहीं जरा समझा देना, बात समझ नहीं आ रही है बात की इजाजत। हमने वो पिटीशन उसके साथ इसलिए क्लब करवाया कि जो ऑब्जर्वेशन इलेक्शन कमीशन ने दी थी, पहले बताया 332 है क्या? 332 वो पिटीशन है जिसमें हमने चेयरमैन पीटीआई के रिमूवल फ्रॉम चेयरमैनशिप के केस के सिलसिले में जो नोटिस आया था उनको, इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस इशू किया था इमरान खान को। यस, तो उसका तो इससे इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है ना। यूनान डिस्क्वालिफिकेशन का केस चला रहे थे कि हम क्यों ना आपको रिमूव करें फ्रॉम चेयरमैनशिप। वो तो हम बात समझ गए, वो केस ऑर्डर है ना। यस यूनान, में इससे तो कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन की बात पूछ रहे हैं आप। यूनान ताल्लुक है, वो डिस्क्वालिफिकेशन का बेस बना के चेयरमैनशिप से हटाना चाह रहे थे। इसमें जब नोटिस आया कि आपके इलेक्शन नहीं हुए तो उसमें उन्होंने वो फैक्ट्स का जिक्र किया, लीगली इनकरेक्ट कराया। तो जब कोर्ट में चला गया, कोर्ट में पढ़ा गया तो उन्होंने कहा सेम इश्यूज इन्वॉल्व है, लिहाजा लीगल साइड पे उसके साथ अदर क्लब कर देते हैं। अदरवाइज वो इंफ्रैक्चर्स हो चुका है क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट किया है टू द एक्सटेंट ऑफ इंट्रा पार्टीज इलेक्शन। तो अच्छा एक सेकंड है, एक सवाल और उठेगा जी यूनान। एक मैटर आपने खुद लाहौर हाई कोर्ट गए, 5 मेंबर बेंच बनवाई, इलेक्शन का मैटर है, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया है कि आप दोबारा इलेक्शन कराएं, आपका मौक़िफ़ था इलेक्शन सही हो, फिर आपने कहा चलो फिर भी कर देते हैं इलेक्शन, दोबारा खुश हो जाएं, तो फिर आप लाहौर हाई कोर्ट ही में रहते हैं ना, फिर आप पेशावर क्यों चले गए? यूनान हमने इलेक्शन पेशावर में करवाए थे, इलेक्शन पेशावर में करवाए थे, तो उससे तो कोई मतलब मेजॉरिटी ऑफ रीजन खान साहब जरा मुझे कानूनी हम क्यों गए थे यूराना, फोरम शॉपिंग करने नहीं गए थे। इस्लामाबाद में हमारी लीडरशिप आपने इस्तेमाल किया, मैंने नहीं इस्तेमाल किया। मैं ये यूराना सिर्फ एक मिनट, आप देखिए ना, एक कोर्ट के पास एक लिस्ट पेंडिंग है, यस यूराना, इलेक्शन ही के मुताबिक है, और ना सिर्फ आम बेंच है, मैंने 5 मेंबर बेंच आपके लिए बना ली है जी। अब वो मैटर पेंडिंग होते हुए दूसरा हाईकोर्ट देख कैसे सकता है इस बात को? ये इसका जरा कानूनी जवाब दीजिए। यूराना मैंने अर्ज ये किया कि टू द एक्सटेंट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो पिटीशन इनफ्रक्चस हो गई जब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। वही ऑर्डर है ना, ऑर्डर तो वही इलेक्शन कमीशन का। यूराना वही ऑर्डर है, लेकिन उसको जब हमने अमल कर लिया उस पर, जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो हमने इलेक्शन कराए पेशावर में, पेशावर में इस इलेक्शन ना इंफ्रक्शंस होने की, ये मेरे हिसाब से आपकी बात लॉजिकल है, मगर इस ऑर्डर में आपके वकील ने कहा कि नहीं इंफ्रक्शंस हुई है। यूराना वो लीगल साइड पे इंफ्रक्शंस नहीं हुई ना। ऑर्डर Sayyid Ali Zafar advocate representing the petitioner submit that since similar question is already sub judice before the learned full bench of this court in WP number 332 and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. Yes, Your Honor, High that's Court right. raised the question. High Court has raised the question that it has become sub judice because you have already complied with the order. Yes. But if your counsel said that it is not sub judice, let it be fixed before the same 5-member bench. Your Honor, yes, to the extent of holding up What you are intra-parties arguing, that elections. is correct. According to legal situation, it had Yes. become infructuous. So that has become infructuous to the extent of intra-parties elections, but since the questions were This is the involved, divergent arguments between you and the earlier counsel. Your Honor, the legal questions involved in the petition were alive, so they were kept to the extent of those legal questions, and that's the reason that is being clubbed and referred to the full court. We held the election, they were full, the election were held at Peshawar. Your Honor, the entire leadership was unable even to come to नहीं, सॉरी, Islamabad. आपके अपने इलेक्शन कमिश्नर ने कहा they were not held in Peshawar, they were held in some place called चमकनी। Your Honor, हमने अरेंजमेंट करवाए थे, इनको सिक्योरिटी मांगी, हमने पेशावर जी योर ऑनर, Are you arguing as party, as counsel, what? योर ऑनर जो आपकी असिस्टेंस हो सकती है मैं उसका जवाब हम तो सीनियर काउंसिल जी लेना चाह रहे हैं। We have noted all the questions. मैं सिर्फ Put in writing. खान साहब देखिए, let's go by constitution and the law. जी हम अभी उस पर नहीं आए कि आपने सही किया गलत किया, इन्होंने सही किया गलत किया। जी आप इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया, सही किया गलत किया वो भी हम नहीं देख रहे हैं। वो ऑर्डर को आपने जाके लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जहां से एक पहले से पिटीशन पेंडिंग पड़ी थी, आपने कहा इस पिटीशन को उसको साथ लगा लें, चले ये भी ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट पे लार्जर बेंच बना दे, उन्होंने 5 मेंबर बेंच बना दी। फिर अली जफर साहब पेश हुए और उन्होंने कहा जी
कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अब तो आपने इलेक्शन कर लिए, तो अब आप ये पिटिशन इसको खत्म कर दें। उन्होंने कहा नहीं, इसको आप रखिए सब जुडिस विद फुल बेंच। अब ये मैटर इलेक्शन का मैटर है। चलें, अब या तो आप इंतजार करते कि हाई कोर्ट, या तो आप इसको वापस ले लेते, वो आप नहीं कर रहे हैं, इंतजार रख रहे हैं। आप जाके इशारा हाई कोर्ट कैसे पहुंच गए, ये मुझे समझ नहीं। देखिए, ये तो सब्सिक्वेंटली जब इलेक्शन हो गया और उसको इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं पसंद आया? नहीं, लाहौर इसकी वजह आपको वही मतलब ये नहीं सर, उसका वजह ये, जब हमने इलेक्शन कराए हमें कहीं और सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा रही थी, सिर्फ पेशावर में हमें सिक्योरिटी फ्राहम की गई। अगर हाई कोर्ट ही दे, मुश्किल सवाल हम हमेशा सीनियर काउंसिल से पूछते हैं। ये मुझे राइटिंग में जवाब सारे बिल्कुल देंगे राइटिंग में आपके सामने। मगर देखिए ना, फिर मसला ये है ना कि ये एक आम केस होता है ना, ये है टाइम रिलेटेड केस। ये आपको सिंबल नहीं दे रहे हैं, आपको एक सिंबल चाहिए, तो हम तो चाह रहे हैं कि अगर आपका सिंबल बनता है आपको फौरन मिल जाए। तो हम आमतौर पे तो आपको बहुत टाइम दे देते, मगर इसमें फिर आपको सिंबल नहीं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भी मैंने अपने कोलीग्स को कहा कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट केस है, इसको पहले करें। अब देखिए, वही सारे लोग हैं, सैयद अली जफर साहब भी वहाँ मौजूद हैं, वो भी नहीं बता रहे हमें कि क्या बना उस केस का। ये तो नहीं कि दूसरे काउंसिल हैं, वही काउंसिल है ना सारे। सबमिट इन द मॉर्निंग सर। ये देखिए, अब आप गौर साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया जो मैं नहीं करना चाह रहा था, फोरम शॉपिंग, जो कोर्ट्स जनरली फ्राउन अपॉन। तो यहाँ से रिलीफ नहीं मिली तो जाके वहाँ फाइल कर दो, वहां से नहीं मिली तो दूसरे कोर्ट में चले जाओ। तो फिर ये सिस्टम को खराब करता है। तो देखिए, अब आपने ठीक है, लाहौर चले गए, फाइन, तो फिर वहीं रहिए ना लाहौर में, फिर आप क्यों जा रहे हैं पेशावर? या फिर आप जाइए जहाँ के इलेक्शन कमीशन मौजूद है, जो कि इस्लामाबाद है। तो देखिए, अब आप कहें जी मैं इलेक्शन करता हूँ जाकर फलाना जगह मैं इसलिए पिटिशन करूंगा, आप अपना कॉज ऑफ एक्शन ही क्रिएट कर सकते हैं। कॉज ऑफ एक्शन इज क्रिएटेड बाय लॉ। कि मैं ये काम करूंगा तो मैंने जो काम किया उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जनाब, अच्छी तरह जानते हैं भाई। आपके सामने बात पूरी सुनो। हाँ, आपके सामने पेंडिंग है केस जिसमें हमने अर्ज किया है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे, हमें हरेस किया जा रहा है, हमें कहीं सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, हमारे लोगों को अंदर किया जा रहा है, ये सारी बातें कही। हमारे साथ जो हो रहा है इन दी सर्कमस्टांसेस में, ना इस्लामाबाद में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, ना लाहौर में जहां हम इलेक्शन करा सकते। सो पार्टी ने डिसाइड किया कि द ओनली प्लेस वेयर सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड is in Peshawar, and therefore we held the election in Peshawar. When elections were held in Peshawar, territorially it was only right and proper to file it before the Peshawar High Court. So see, these are the various stages of the case. देखिए खान साहब, एक होता है इंतजामिया, इसमें अभी कई, एक है इलेक्शन कमीशन, वो एक आईनी इदारा, एक है अदालतें, जो कि आईनी अदालतें हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आप आए
हुई, हमने उस केस का फैसला 12 दिन में कर दिया कि इलेक्शन हो। 8 फरवरी की तारीख तय हुई, सब लोग खुश थे, आप भी की पार्टी खुश, इलेक्शन कमीशन खुद, सदर खुश, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं कहा, अटॉर्नी जनरल खुश, चारों एडवोकेट जनरल खुश, सब ने ये मुतफ़िक़ा तौर पे ये हो गया। तो जब भी कोई, अब आप यकीनन आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें होंगी, मगर कोर्ट उस वक्त आएगा जब कोई आए तो उसके सामने ना दूसरे केस में कंटेम्प्ट मैटर में आए, वो एक और बेंच में फॉर वाली। तो ये जहां तक हमारा ताल्लुक है, या तो बताएं हमने कोई काम नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट को आप गए, आपने कहा जी लार्जर बेंच बना दो, उन्होंने 5 मेंबर की बेंच बना दी, फिर आप उसको अबैंडन कर रहे हैं ना। या तो आप कहें कि मैं वापस देता हूँ केस खत्म, मगर उस केस को लटका के कहीं और कैसे जाना है, ये जरा समझाने की, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें वो वर्चुअली इंफ्रक्चर्स हो गया, इसलिए एक लाइन की दरखास्त देना थी ना, वो तो कोर्ट खुद आपको कह रही है आपने इलेक्शन कर लिए तो मैटर खत्म हो गया, आपने कहा नहीं नहीं, फिर आपने अपने आप को रोक दिया लाहौर हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में। आप उधर से निकल जाते, आप कहते कि खत्म हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद छुट्टियां हो गई थी, केस लगा नहीं उसके बाद, जो भी बात है, मगर वो लाहौर हाई कोर्ट ने सीज तो कर लिया ना, लिस्ट वहां पड़ी हुई है। एक इलेक्शन का मैटर लाहौर हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, एक इलेक्शन का मैटर इस्लामाबाद में, पेशावर में चला गया। तो अब कॉन्ट्रडिक्शंस भी आ सकते हैं, ये तो कभी नहीं करते ना। ये शॉर्ट ऑर्डर है, ये जुरिस्डिक्शन का इशू उठाए हाई कोर्ट के सामने, पेशावर हाई कोर्ट में, वेदर the writ is maintainable according to the territorial jurisdiction of the only short order. We do not know what are the reasons, if any, assigned by the learned bench of the. So because I was in this case, there is a question of intellectual jurisdiction. sorry to interrupt you. Why? I was counsel for the ECP. You raised your objection. In which case? In my lord, writ petitions, from which this judgment, the impugned judgment arises, my lord. Yes. And to answer my lord's question, not only did I raise the objection of forum shopping based on the Rimzi judgment, but several of the complainants who were also heard, they also raised the same objection that in the first instance, my lord, on Lahore High Court, then the order dated 22nd, which arises from that, is impugned in Peshawar High Court, and through an identical petition also impugned in the Lahore High Court. That, so there is an identical petition to petition 6-1. That's not party's petition. This is absolutely incorrect. My lord, that petition Making incorrect statement. चलिए आप नोट कर लीजिए, that can be responded because is issue of jurisdiction. ये जरा ये तो तय्युन कर लें, WP 81171 of 2023 and WP 33 पेंडिंग है। आज की तारीख में क्या पोजीशन है? 332 में योराना PTI नहीं है, उसमें इमरान अहमद खान नियाजी है। पेंडिंग और नॉट यस पेंडिंग, दोनों पेंडिंग हैं। That is a personal grievance on that. वो भी चले, वो भी अलग कर दिए, मगर आपने उसको खिलाफ कर दिया 81171
how, when the matter is pending adjudication before a court of law, how can you go out of the territory of that court? Your Honor, never subsequent cause of action arise हुआ सजा काट के बाहर आ जाता है, अपने कन्विक्शन से कोटल चाहता है। तो ये वही है, हमने कहा जो फाइंडिंग दी है पहले में वो भी गलत थी। नहीं या देखिए ना, ये जरा देखिए, ये खान साहब की बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस है ना, तो अब जरा खान साहब की अगर सीनियर काउंसिल का भी फायदा हम नहीं उठा रहे ना, अगर आप या फिर वो भी तो हमें कोई इतराज नहीं, आप चुन लें। जरा देखिए लीगल इशू को हम जरा रिजॉल्व, मेरा जो तरीकेकार है शायद लोगों को पसंद भी नहीं है, अगर मेरे या पसंद है पता नहीं, जो मेरे जहन में कोई कानूनी लीगल इशू खड़ा होता है मैं खामोश नहीं रहता हूँ, मैं बता देता हूँ कि ये आप अटेंड कर लें। ठीक है, जब मैं वकालत करता था मुझे वो जज पसंद होते थे जो मुझे बता देते थे कि भाई ये इशू है, कुछ लोग खामोश रहते थे, बाद में कुछ फैसला करते थे, पूछा भी नहीं मुझसे। तो ये मैं आपसे भी है कि जो आपने सवाल पूछा, हम उस पर आपको फैक्चुअल प्ली है ना, इस पे तो कोई लीगल प्ली क्या होगा कि आपने विड्रॉ क्यों नहीं की, और या आपने उसको केस को चलाया क्यों नहीं, या आप दरखास्त देते कि आप केस मेरा क्यों नहीं चला रहे हैं कि भाई बहुत अहम केस है जल्दी करें। ओके, तो कैन वी कंटिन्यू विद जी मखदूम साहब, फरमाइए। Just to complete the sequence of what your lordship was presently dealing with, even after the second order was passed, in spite of the pendency of the petition in the Lahore High Court in the first order, this second order was challenged before the Peshawar High Court. It was more or less within a few days also challenged before the Lahore High Court. The Lahore High Court dismissed the petition. और पिटिशन जी दूसरे ऑर्डर के खिलाफ, that is my lord the petition number 287 of 2024 of 2024। ये पहले पिटिशन दिखाई कहाँ है? Sir, this is order page 615 to page 615 to 630। ये एक चीज अजय, ये दो केसेस मालूम कीजिए लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है या नहीं। ये At 616, your lordship will see they claim to be ex-secretary general and candidate PTI Gujranwala, ये उमर आफ्ताब हैं आफ्ताब और बिलाल नासिर और